Hello everyone, welcome back to Excel Funda. So in this video we are going to understand very important topic from the Leetcode is path in the matrix whose sum is divisible by k. Okay, so very first I'll go through the statement here and we'll talk about in Hindi and English both. So both type of problems, both type of users can understand easily. Okay, so mostly let's try to understand today's videos and the concept behind that. Okay, so let's try to understand. सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट पाथ इन द मैट्रिक्स whose sum is divisible by k means there are multiple paths in the grid we have whose sum is divisible by k. So उसमें से ऐसा पाथ हमें चूज करना है, राइट, जिनका सम क्या है. अगर हम उन सबका सम करें, मतलब बहुत सारे पाथ हैं, उन सारे पाथ का सम अगर करें और अगर वो डिविजिबल बाई के है, राइट, दैट इज आवर आंसर. ओके, सो जो प्रॉब्लम नंबर है लीटकोड 2435 जो कि आज के कंटेस्ट में आया है. एंड ये हमसे क्या पूछना चाहता है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग चैलेंज दे हैव गिवन एंड वी हैव टू ट्राई टू फाइंड. बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे. मीन्स यू विल सी द मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक दिस इन द पाथ फाइंडिंग वेयर यू विल सी द मॉडुलर अरिथमेटिक कांस्टेंट्स वी हैव गिवन. ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए और आपको ग्रिड में चलने आना चाहिए. यू नो हाउ टू एक्सप्लोर द पाथ finding in the grid. So it's a special type of problem where you will learn how to traverse in the 2D grid and how will you find the path. So most basically this type of problem will ask the Microsoft or any other purpose company ask, but basically I have saw the Microsoft will ask this type of problem where you know you will have to find the path and path finding problems, and with obstacles, sometimes no obstacle like this we have, like that you have to find. If obstacle is given, then you have to find the path. If obstacle not given, then it will give some arithmetic like this problem. Okay, this is what we have guys. So कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम में दिया क्या है. सो आपको दिया गया है अ ग्रिड ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड इंटीजर के विच इज डिविजिबिलिटी टारगेट एंड स्टार्टिंग पोजीशन जो कि टॉप लेफ्ट सेल 0 आप अपना जो लीड कोड है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें दे रखा है 2 सेल, राइट. टॉप एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 दोनों देखें तो एग्जाम्पल 1 में क्या है 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट के बॉटम पे जाना है, राइट. सो द क्वेश्चन सेइंग दैट अ ग्रिड वी हैव गिवन टू डी मैट्रिक्स वी कैन से which is non-negative integers, all values are positive value. ठीक है, एंड इंटीजर के अनदर आर्गुमेंट वी हैव गिवन इज के जिससे डिविजिबिलिटी चेक करना है. एंड स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा 0 ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कहाँ पे आएगा डेस्टिनेशन m-1 n-1. सो स्टार्टिंग पोजीशन इज टॉप लेफ्ट सेल एंड द m-1 n-1 इज द बॉटम राइट सेल. ओके, सो इफ यू मूव, so what is the move restrictions? You cannot move all the ways, you only move to right and down only. Okay, this is what the question is saying. What is our mission? Our mission is for every positions, right, every possible paths that is starts from start to finish, you have to sum all the paths which is encountered along the way, right. So आपको क्या करना है, you have to count how many path produces some divisibility by k and then you have to return the modulo 10 to the power 9 plus 7, right. सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, इसमें ग्रिड का जो मैक्सिमम सेल्स हो सकता है 50,000 सेल्स तक जा सकता है, राइट. m क्रॉस n शुड बी लेस देन 5 into 10 to the power 4. दिस इज व्हाट वी हैव गिवन द कंस्टेंट, जो यही हो सकता है. सो इफ यू विल ट्राई द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू फाइंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, इट विल डेफिनेटली विल नॉट एक्सेप्ट बाय द लीड कोड और एनी अदर प्रॉब्लम जजेस. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल सॉल्व दिस. सो वेरी फर्स्ट आपको डीपी आना चाहिए और the grid traversal आना चाहिए, right. This is what it is essential. So very first jumping into the problem, let's try to understand the constant. So constant given क्या है, m cross n होगा up to 10 to the power 4 we can say, means 550,000 approximately cells will be there. So if you talk about the each cell value could be any non-negative integers जो 0 से 100 के बीच में होगा. देन वी हैव डिवाइजर के जो कि 1 से और 50 के बीच में होगा. सो दिस कंस्टेंट गाइड्स आवर सॉल्यूशन अप्रोच. लेट्स सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड इज वी हैव द मैसिव ग्रिड साइज दैट डिमांड्स efficient dynamic programming, and while the limited k value maximum 50 that allow us to keep track of
finding the remainder as a state variable without excessive memory overhead. Okay, so if you break down the problems, you will see that we have given the input size 524305072 and k we have given, means two things we have given, the grid we have given and k we have given. So expected output kya hai? 2. So if you will see the grid will look like this one. So it start at where? At 0 0 and it will go to 2 2, but you need to find all those paths whose sum is divisible by k. So if you start at 0 0, right, whose value is 5, you have to reach to 2 2 right here where the value is 2. So each path require exactly 2 moves, either it will be right or you have to move 2 downs, right, we can say that. So it will create multiple possible routes through the matrix, correct? So let's try to understand the valid path, we can say, that we have given in the example. So it is a red route, we can say. So it started at 0 0 and goes to 0 0 1, then it is goes to 0 1 to 0 2, then 0 2 to 1 2, like that we have given, right? So if you calculate all the path, definitely we will get 18. If you divide by this modulo, you will definitely get 0, which is the answer toward our answer. Then we have another blue route. So another blue path 2 we have given is like this, where you just need to do what? Path calculation. So you know the how to do path calculation, then you will take the remainder, definitely will get 0. So there is 2 path we got, right? So only these 2 path produces the sum divided by 3, and definitely this will be counted to 2, therefore the output is 2. हमने देखा एक रेड लाइन एक ब्लू लाइन. ओके, ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं गाइज, करेक्ट, मोर देन many, right? Let's try to understand the dynamic programming approach. So very first, track the remainder, not the sum, right? Store the remainder. Let's suppose sum you will take and you will take the remainder k modulo, it will give you the remainder. Then define the state. Let's suppose you will take ij and remainder. It represents the positions and the current modular values. Then you will do the bottom up, right? So it will create the number path to each state by combining the path from the above and the left. Then you will go to the exact result, right, where you will find the path, right? And then this is whatever the data you will get, that is the key insights, is that we only need to track the remainder modulo k at most 50 values and not the actual sum. So this reduces our state space dynamically and makes the solution conceptually. So very first, what I told you, you need to track the remainder, not the sum, and to do that you have to store the remainder sum modulo k, it will give you the remainder, right? That so you don't need to find the sum, and you have to focus at each position at the remainder, not the sum. Then you will define the state. So state will take I and j and another is remainder. So you will have the positions of each cell and its current modular value. Then we will build up the you can say number of paths for each state by combining the path from above and the left. Then we will take the extract result, means हमें क्या करना है, path count करना पड़ेगा, right, till that, okay, जहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा. सो ऐसे करके गाइज हमें बहुत सारे पाथ्स मिलेंगे जिसको ऐड करेंगे और हमें पाथ मिलेगा, जैसे हमने रेड और ब्लू पाथ हमने देखा था. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग द रेड पाथ. सो स्टेट रिजोल्यूशन क्या होगा, लेट्स ट्रैक पोजीशन running sum and remainder for each step of our first valid path. So this will demonstrate how the DP state transitions work. मतलब समझते हैं कि कैसे state evaluations हुआ है इस प्रॉब्लम में रेड पाथ के लिए. So if we'll start from 0, so we will say okay, position 0 0, cell value is 5, running sum is 5, so we will take the remainder, you will get definitely 2. Then we have to move to the right side, so position becomes 0 1, cell value is 2, and if you will take the sum, running sum, you will get same, remainder is 7 mod 3, you will get 1. So ऐसे करके हम आगे मूव करते जाएंगे और हमें वहाँ पे वैल्यू ट्रेस करके फाइनली हमें मिल जाएगा, राइट. सो इफ पाथ कंप्लीट रिमाइंडर इज 0, राइट, आप देख सकते हैं. So what is the takeaway we have here is, we are very first is
the question we have given is based on modular arithmetic, which is very essential. So you need to know how to find the remainder. Very first is to track the remainder, sum modulo k, it will give the remainder and you have to track it, right? Then the dp state, that is matters ij and remainder, and you have to build the solution incrementally. So you need to find count, that will count all the previous cells from top to left, how we are moving, right? We are reaching to the n-1 n-1. This is what we have, guys. So time complexity definitely will get m cross n for k. We will multiply the k. This is what we have. And if you talk about the space complexity, it will be the same. और so guys, हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमने यही देखा कि हमें दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो ग्रिड और के, राइट? सो आपको ग्रिड एंड के गेट कर लेना है, एक डीपी एरे बना लेना है, एज वी नो दैट, राइट? दैट इज वाई द स्पेस बिकम n इंटू m इंटू के, राइट? सो यू नीड द डीपी ग्रिड, राइट? देन i और j आपको ट्रेवर्स कराना है, and we know that it will start at where 0 0. So you need to store ij and grid 0 0, you have to multiply like this, so it should be equal to 1, then you will keep continuing that. Okay, otherwise आपको क्या करना है, ग्रिड की वैल्यू लेके आनी है, राइट? प्रीवियस जो मोड है उसमें क्या वैल्यू था, और वी नो दैट what you need to do, right? And then finally you will return the dp. Okay, this is what we have to do. We have to traverse and you have to store the previous grid value also. So to store the previous remainder, you can get from the previous mode, as you can see. Okay, this is what we have given, guys. So in case if you need any help, please ping me in the comment box, we will definitely help you. तो हमने क्या किया है, सबसे पहले टीपी हमने बनाया है एरे, और आईसी लेकर के हमने ट्रेवर्स करना शुरू कर दिया है. सबसे पहले चेक करेंगे जो बिगनिंग है आई और जे, इनमें से दोनों अगर सेम होता है 1 1, तो वहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, डायरेक्टली 1 असाइन कर देंगे वहाँ पे, एंड देन कंटिन्यू करते चले जाएंगे. ठीक है, इन अदरवाइज केसेस में क्या होगा, हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा उस ग्रेड पे रिमाइंडर के साथ, और हमें जो भी रिमाइंडर वाला वैल्यू है 0 to k तक हमें जाना है, राइट? रिमेंबर एक के हमें दिया हुआ है, तो के हमें जाने के लिए रिमाइंडर 0 to k जाना पड़ेगा, और हमें प्रीवियस मोड की वैल्यू निकालना पड़ेगा ऐसे, और डीपी में स्टोर करना पड़ेगा ऐसे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, एंड फाइनली विल रिटर्न दिस. So thank you guys, thank you for watching this video. In case if you need any help, please ping me in the comment box. Thank you guys, thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, subscribe, and let us know what you want to learn next in the comment below. And thank you for watching this video.